टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाबद में। जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स बाबद में। तो आरंभ करवा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स बाबद में। तो हेजनबर्ग द्वारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता तो सी बाबद आम ये डिस्कस करवा। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, so Heisenberg uncertainty principle, one of the most important consequences of dual nature of an electron is the uncertainty principle developed by Werner Heisenberg. So according to uncertainty principle, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हेजनबर्ग प्रूव कर माने डेवलप करथिले बा कॉन्सेप्ट देथिले, तो तार जदि हम देखिबा प्रिंसिपल कोन कहे ना, it is impossible to measure simultaneously both position and velocity, that is momentum of a microscopic particle. गोटे microscopic particle रो at a time आम position एवं velocity मेजर करवा, it is impossible with absolute accuracy and or certainty. तेणु absolutely माने accurately जोटा आम तार पोजिशन एवं तार वेलोसिटी गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रो एट ए टाइम जानिबाटा बहुत माने कोन कष्टकर बा इम्पॉसिबल. So mathematically, according to this principle, the product of uncertainty in position, that is del x, and uncertainty in moment, that is del p, of a microscopic particle. So is microscopic particle रो जो आमे नेबा जदि uncertainty movement जोटा del p आकार नेले एवं uncertainty position जोटा कि del x आकार नेले, तो that is constant. The value of constant was later on found to be h by 4 pi. So thus Heisenberg uncertainty principle may be expressed as del x into del p is greater than equal to, that is h by 4 pi, और हम लिखि परिबा del x into m del v is greater than equal to h by 4 pi. So where del v is uncertainty in velocity, h is Planck's constant. So the constancy of the product of uncertainties means that two are inversely proportional to each other. तो ई केस रे जो हमें constancy of the product uncertainty means two are inversely proportional to each other. Thus, if the position of an electron is known with certainty, its momentum cannot be known with certainty and vice versa. जदि आम पोजिशन जापर ताले तार मोमेंटम जापर, जदि मोमेंटम जाना ताले तार पोजिशन आम जापर. तेणु ये आम देखले जो कथा बा जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आम देखले जे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन, तो सी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रो फिजिकल कॉन्सेप्ट कौन रही देखा. So to understand this concept, one should study the effect of light on material objects. Exact position of an object can be determined if it is visible. जड़े ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर पारिबो जो लाइट रो इफेक्ट अनुसार, कहीं आम डार्क हेले आम इजिली से जगह देखि पार न था. तेणु जो से ऑब्जेक्ट ऊपर लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट होकर आम आखि ऊपर पड़े, तो से आम ताको इजिली देखि पार. So exact position of an object can be determined if it is visible. An object will be visible only if the light reflected it falls in visible region. तो visible region भितर लाइट जदि पड़े कि आम आखिरे पड़ला एबा रिफ्लेक्टेड हैला, ताले सेतेबेले जाके हम से ऑब्जेक्ट को देखि परिबा. So in order to observe an object, the wavelength of light should be smaller than its size. So if we use light radiation of a higher wavelength, they are not visible and exact position cannot be determined. So ये जो गोटे ऑब्जेक्ट को जिते आम ऑब्जर्व करूँ, जदि वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी स्मॉलर, जो ऑब्जेक्ट जो वेवलेंथ जदि स्मॉलर हम ताहले आम से केसटा को माने से ऑब्जेक्टा को आम ऑब्जर्व कर परिबा. जदि लाइट रेडिएशन हायर वेवलेंथ हम ऑब्जेक्ट ठारू,
ताहले से केस रे आमे केबे भी माने कोन तार पोजीशन एक्जेक्ट पोजीशन आमे तो डिटरमाइन करि परबानी प्लस ता सहित आमे विजिबल भी करि परबा नै. So when a beam of ordinary light falls on an object of reasonable size, that is maybe microform or semi microform, so it will be visible with the naked eye. So its position or momentum or velocity will not change by the impact of light used. So thus it is possible to know both position and velocity of macro and semi micro object exactly. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ଖାଲି ଆଖିକୁ ଆମକୁ ଭିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବ. ସୋ ଇଟ୍ସ ପୋଜିସନ୍ ଆଉ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଟ୍ରେ. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ଆଣିବା ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର କଥା, ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ जो जेहेतु इलेक्ट्रॉनटा होची गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. सो but the situation is quite different in case of microscopic objects like electrons. So these objects are not visible if ordinary light is used. जदि हमें ordinary light से केस रे यूज करिबा ताले it cannot be visible. So therefore light radiations of short wavelength, जो short wavelength means high energy वाला, so are able to used when such a photon of radiation strikes on electron, it transfers some of its energy to the electron. तो जितेबाला नॉर्मल ये जो एनर्जी बेस्ड जो वेवलेंथ जो बा लाइट पड़ुची इलेक्ट्रॉन उपरे तो किछि अमाउंट रो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन को. So as a result, velocity and momentum of the electron changes and it adopts a new path. So on the other hand, if we use photons of radiation having longer wavelength, that is low energy, यदि wavelength अधिका हेतिबो ताले low energy, यदि wavelength high हेतिबो ये wavelength यदि माने large हेतिबो ताले low energy, एवं यदि wavelength यदि कोन हेतिबो ना स्मॉल हेतिबो ताले सेटरे हाई एनर्जी रहइबो. तेणु यदि लंगर वेवलेंथ हेतिबो ताले लो एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिस्टर्ब्ड and hence will not be visible. So thus the position of the electron cannot be known with certainty. तेणु आमे जो केस रे जे देखिबा जो हमरो इलेक्ट्रॉन जो डिस्टर्ब होबनी को केस रे ना जदी लंगर वेवलेंथ रहइबो तेणु से केस रे डिस्टर्ब होबनी एवं हेंस आमे देखि भी परिबेनी. Thus, the position of the electron cannot be known with certainty. So the velocity and moment of electron will, however, not change appreciably. तो से केस रे जो जति की चेंज होबा कथा से सब चेंज होबो नाही इलेक्ट्रॉन जति हमें लॉन्गर वेवलेंथ देबा, दैट इज लोअर एनर्जी बेस्ड वेवलेंथ. तेणु hence we cannot determine simultaneously both the position, momentum or velocity of a moving microscopic object like electron. तो जोड़ा को मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट तो ताको हमें साइमल्टेनियसली तार पोजीशन आउ मोमेंटम बा वेलोसिटी सेटा को हमें केबे भी डिटरमाइन कर परबा नाही. तेणु ये डायग्रामेटिकल देखिबा जे माइक्रोस्कोपिक अंडर जे इंसिडेंट लाइट आसिक इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ेला, इलेक्ट्रॉन गोटे न्यू पाथ प्रोड्यूस करछि एवं जोटे कि हमरो रहउछि माइक्रोस्कोप अंडर रे हमें देखि परिबा जोटे कि ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ई होछि ओरिजिनल पाथ, किंतु जेतेबेले लाइट पड़छि सी इट क्रिएट्स ए न्यू पाथ. So the uncertainty is not due to lack of better technique. ये जो हम कहूँ हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी कहबार अर्थ है जी आम ये जो कहूँ बेटर टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन मोमेंट से नुह, बरं जेहेतु आम इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वी कैन नॉट ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम. तो तांको डिस्टर्ब न करिकी आम केबे भी तांको देखि परिबा नाही. तेणु सेथिपई ई केस रे आम अनसर्टेनिटी टर्म यूज करछु. सो नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन सिग्निफिकेंस रोचे.
So uncertainty principle is not useful in daily life. हमर daily life रे जोटा हम यूज करछु जोटा कि हमर neglected in daily life ये हाइजेनबर्ग uncertainty principle को हमें डेली लाइफ रे याकू एवॉइड करथो बा नेग्लेक्टेड करथो बिकॉज एटा हमर जो नॉर्मल जो फॉर्म जो ऑब्जेक्ट रहउछि ताको हमें नॉर्मल लाइट रे हम जो देखुछु तो एटा हमर uncertainty principle ए जगह रे किसी practical applications नहीं. So because the photons of light do not bring major changes in the position and moment of massive objects. ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଅନସର୍ଟେନିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାଇଁ ଯିଏକି ଲାଇଟ୍ରେ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିବ. So the principle is applicable to moving microscopic particles which cannot be seen with naked eye. जोटा हम खाली आंख रे देखा जाए नहीं, सही प्रकार particles ପାଇଁ ये Heisenberg uncertainty principle टा applicable. So it has introduced the idea probability of finding an electron in a particular position or in a particular volume of space. तो ये प्रकार जो आइडिया probably finding an electron particular position हेतिबो एवं particular volume of space हेतिबो. So next time देखिबा आसो जो problem गोटे रहिछि जेमिति कि what will be the minimum uncertainty in the position of electron when the uncertainty in the momentum is 1 into 10 to the power minus 4 gram centimeter per second, that is Planck's constant is 6.6 into 10 to the power minus 27 or second. So uncertainty in momentum, that is del p is equal to 1 into 10 to the power minus 4 gram second per second gram centimeter per second, and Planck's constant देला एतिकी देला ताको हम ग्राम रे कन्वर्ट करले, that is 6.6 into 10 to the power minus 27 gram centimeter square per second. So according to uncertainty principle, that is del x into del p is nearly equal to कोन h by 4 pi. So del x is equal to जेहेतु हमरो एडी del x जोटा कि मागी थिला कोन what will be the position minimum position of electron, तो हमको del x बाहर करिवार अछि, तो हमको ऑलरेडी del p दे दीची del x बाहर करिवार अछि, तो del x is equal to h by 4 by del p. तो से अनुसार वैल्यू पुट कला परे आसिला 0.525 into 10 to the power minus 23 centimeter. So ये हमें देखिले Heisenberg uncertainty principles बाबदरे. So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.